When was the 44th Constitutional Amendment Act? देखो हुआ क्या था. A lot of changes in the Constitution of India were made by the 42nd Constitution. Changes were high, right? Constitution इतना कुछ चेंज कर दिया था कि छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, राइट? अब इसके बाद ही इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड. विच इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 which has been invoked 3 times in India, है ना? तो नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड. जिस वजह से अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ऑल्सो हैड टू suffer in elections, right? So in the year 1978 a new party came up which won the elections also, which called as the Janata Party. उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई. नाउ एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन है, राइट? तो ये जो रॉन्ग्स किए गए, सर्टेन रॉन्ग्स, जैसे इधर से सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन लिया गया था स्टेट लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का, हाई कोर्ट से ये पावर छीन ली गई थी कि वो नेशनल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करें. तो ये सारी चीज़ें करेक्ट की गई थ्रू व्हाट? थ्रू द 44th Constitutional Amendment Act of 1978. Now who was doing all of this? This was being done by Janata Party. Who was heading it? Morarji Desai. Now the question is, when was the 44th Constitutional Amendment Act enacted? So your answer becomes 1978, right?